Hi my dazzlers, welcome back. So this look is a sunset glow makeup look which ChatGPT has suggested for me because I asked that create a makeup look for Sush Dazzles and it just suggested this makeup look. And for the sake of fun, I asked it to translate it into Hindi. मुझे नहीं पता था कि ChatGPT शुद्ध हिंदी में tutorial करवाएगा मुझसे. So in this tutorial, I just followed what ChatGPT asked me to do. I don't know, you guys, tell me if you guys like this makeup look or not because while I was doing it, actually I shouldn't say it, you should watch it. Alright guys, so let's get started. Hello, सौंदर्य की दुनिया में आपका स्वागत है. मेरे चैनल सच डैज़ल्स में आपका फिर से स्वागत है. आज मैं बहुत उत्साहित हूँ कि आपके साथ एक मेकअप लुक को लेकर साझा करूंगी जो एक सुंदर सूर्यास्त की रंग बिरंगी चमक का प्रतिनिधित्व करता है. तो चलिए साथ में एक सुंदरता और चमक भरी यात्रा पर निकले. शुरुआत में हम अपनी त्वचा की तैयारी करेंगे ताकि हमारी बेस फ्लॉलेस हो. अपना चेहरा धोकर और अपने पसंदीदा मॉइस्चराइजर लगाकर त्वचा को तरोताज करें. ओके, सो मॉइस्चराइजर के लिए मैंने सीटाफिल लगाया है. अपनी त्वचा को हानिकारक यूवी रेखाओं से बचाने के लिए धूप से सुरक्षा के लिए अच्छी मात्रा में सनस्क्रीन लगाएं. और सनस्क्रीन के लिए मैं एक्वालॉजिका सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ. उस सूर्य किरणों से भरे चमक के लिए मैं हल्का नमीदार फाउंडेशन से शुरुआत कर रही हूँ जो हमें एक प्रकाशमय त्वचा प्रदान करेगा. इसे अपने चेहरे पर समान रूप से लगाएं और मेकअप स्पंज या ब्रश का उपयोग करके इसे अपनी त्वचा में सहज रूप से मिला दें. ओके, सो आई गेस आई हैव टू यूज अ सॉफ्ट ग्लोई फाउंडेशन. गोइंग टू मिक्स माय Estee Lauder Double Wear foundation and I am gonna mix it with Nykaa Strobe and Glow liquid highlighter. So taking the tiniest amount of foundation, mixing it with a liquid highlighter, blend and apply it. I thought it's gonna give me easy Hindi, but the Hindi is really tough. I'm gonna blend it with my beauty sponge. Okay, अब हम आँखों की ओर बढ़ते हैं जो इस लुक का मुख्य बिंदु है. एक चमकदार सोने का आईशैडो लेकर आरंभ करें जैसे एक बेस. So चमकदार सोने का eyeshadow, I'm feeling like it's gold eyeshadow. So I am going to take this golden eyeshadow. Oops, oh my god, this is so pigmented. So for the base, I am applying this all over my eyelids. फिर आँख की खोखली में गहराई और आयाम जोड़ने के लिए गरम. What? फिर आँख की खोखली गहराई और आराम जोड़ने के लिए गरम. I can't read. गरम के बाद और गरम नारी शाद को मिलाएं. What? What is this? What? How can I create a look like this? I'm crying. Like it's so funny. Oh my god. What is this? I just don't understand. Please give me the English translation. या आँख की खोखली में गहराई और आयाम जोड़ने के लिए गरम नारी शाद को. It's sounding so inappropriate. आँख की खोखली में is crease. Oh, नारी शाद is orange. Basically, it's asking me to apply an orange color on the crease of my eyes. This orange shade. So taking this, I'm gonna apply it in the crease of my eyes. I don't know, like golden and orange. I would have never done this. So I've added orange. अधिक ड्रामा के लिए अपने बाहरी कोने को धनात्मक तंबा रंग से परिभाषित करें और अपने आंतरिक कोने को एक शैम्पेन शिमर के पॉप से हाईलाइट करें. I think it's asking me to blend a copper color on the outer corners of my eyes and then a champagne color in the inner corners. So let's do that. So for the bronze color, I'm going to use the K-Beauty Wild and Free eyeshadow palette and I'm going to use this shade. I'm not much into the look, but let's see how it looks at the end. So right now I'm just trusting ChatGPT and doing whatever it's asking me to do. But then before doing the inner corners, I want to do my under eye area. I don't think ChatGPT has said anything about the concealer. First of all, we're gonna apply concealer because ChatGPT has clearly forgotten.
and then blend it. And then I'm gonna set it with a loose powder. I am now going to use a champagne color in the inner corners of my eyes. So for the champagne color, I'm using this highlighter, Mary Luminizer, and I'm just placing it in the inner corners of my eyes. I don't think I can see the gold anymore, so I'm just gonna apply some more gold in the middle of my eyelids. Because when I was blending the bronze is now showing too much. Still not into the look. It says अब हम आँखों में परिभाषा जोड़ने जा रहे हैं एक डार्क ब्राउन कोल आईलाइनर के साथ। आँखों को आपकी ऊपरी पलक के कोने से हल्की हाथों से ग्लाइड करे, आरंभिक कोने से और बाहरी कोने में बढ़ावा दे। अगले आंतरिक पलक की लाइन उसी डार्क ब्राउन कोल आईलाइनर के साथ धीरे धीरे करे, आंतरिक पलक को बाहरी पलक के बाहरी कोने से जोड़े. The eyeliner that I'm using is K Beauty. It's a brown kohl and I'm just applying it on my upper lash line and also my lower lash line, and then I'm just gonna smudge it with a smudging brush for that smoky effect. This is how it looks. I'm still not into the makeup look, but I just have a lot of patience for this, so I'm just going ahead with this. Okay, अपनी आँखों का मेकअप खत्म करें जिसमें आप अपनी पलकों पर वॉल्यूम और लंबाई के लिए मस्कारा लगाएं और चाहे तो अतिरिक्त ग्लैमर के लिए एक झिल्ली झुलसने वाली झूठी लगाएं. What does it mean by एक झिल्ली झुलसने वाली झूठी लगाएं? Oh my god. Okay, I'm applying loads of mascara. I'm not gonna apply any false mascara. False lashes. So I didn't say anything about the bronzer, so I'm going to use this Mama Earth Full Coverage Glow Compact as my contour. So I'm just gonna contour my cheeks and my jawline. Okay, now अब हमारे गालों में गर्माहट जोड़ने के लिए एक पीची ब्लश जोड़े. मुस्कुराए और अपने गालों के सेबों पर ब्लश लगाए और यह ऊपर आपके मस्तक की ओर मिलाए ताकि आपको एक प्राकृतिक रंग का अच्छा लगे. I don't know what it's saying. So for my blush, I'm taking this K Beauty blush and this is in the shade Sugar Candy. This is a peachy shade. I'm just using it on the cheeks and taking it towards my temples. That's what it says. ना तो समझ आ गया. ये आपको एक स्वस्थ सूर्य छुई ग्लो देगा जो गर्मी के लिए परिप्रम है. Okay, गर्मी means warmth. Now, होठों के लिए हम एक जीवांत कोरल लिपस्टिक के साथ बोल्ड हो रहे हैं. अपने होठों के परिभाषा के लिए एक लिप लाइनर का उपयोग करें और फिर उसे भरें ताकि आपको उसी रंग का एक बड़ा हिस्सा मिल सके जो सिर मोहिनी रंग के लिए तैयार है. Okay, so for my lip liner, I'm using this Auric High Definer lip liner. It's in the shade Pink Passion. Although it's Pink Passion, but it looks like a little bit coral. So I'm just gonna line my lips. I really don't have a coral shade, but this is the closest to coral. This is from Faces Canada, Ultime Pro HD Intense Matte Lips, and this is in the shade Tea Rose. So this is what the shade looks like, and I'm gonna apply it on my lips. I am hating this look. एक मैट फिनिश के लिए टिश्यू के साथ पूरा करें या अतिरिक्त चमक के लिए एक चमकदार चमक जोड़े. Okay, so no, I want a matte lip, so I'm gonna use a tissue. Okay, we got our matte lip. अंतिम स्पर्श लुक को पूरा करने के लिए अपने चेहरे के उच्च बिंदुओं पर एक सोने के रंग के हाइलाइटर को छेंटे. आपके गालों की हड्डियों, आईब्रो बोन्स और नाक का पुलिंग एक लोहा तक चमकदार और अंदर से चमकदार जोड़ने के लिए. Okay, so it's talking about a highlighter. So we're going to use the Mary Luminizer. I'm going to use this. So I'm going to use this on the high points of my cheeks. So हम गालों की हड्डियों पर लगा रहे हैं अभी. Eyebrow bones, nose की pulling. Can also apply it on my chin.
Actually not bad. It also says nothing about the eyebrows, so I'm still gonna do my eyebrows because a makeup look is not complete without eyebrows. अपने मेकअप को सेट करने के लिए सेटिंग स्प्रे की एक छिड़काव के साथ और आप तैयार हैं. Okay, so for setting spray I'm gonna use the Swiss Beauty Makeup Fixer Spray. और ये रहा सौंदर्य साधकों एक सुंदर सूर्यास्त मेकअप लुक जो किसी भी अवसर के लिए पूर्ण है. मुझे आशा है कि आप आज के दौरान मेरे साथ यात्रा का आनंद लेंगे. भूले नहीं, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूले और अधिक सौंदर्य सामग्री के लिए